So some key definitions before we dive into the digital lending. All of you know that digital lending has become the new call, the new era of banking. People don't need to go to banks nowadays, not even for loans. So loans are also now available with us in just one tap. They call it Insta loan, quick loan, whatever it may be. So on your fingertips, loans are available. But at the same time, many Chinese players, many unauthorized players have also launched digital platforms where they are providing loans and looting people. Even they are recording the data, personal data of ours, taking our pictures from our phone through their app. And when we don't repay the loan, because the loans are priced at a very high level, exorbitant rate of interest is charged. Some of us, when they don't pay, they just manipulate these pictures. They just make some bad pictures out of it. They even call and send WhatsApp messages to your contacts, because they gain access of your mobile phones. So these unauthorized applications also utilize our vital personal information to malign us, to blackmail us. ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ, डिजिटल इरा में आजकल जो क्या बोलते हैं आजकल, लोन आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा। बट कुछ चाइनीज ऐप्स, कुछ अनऑथराइज्ड ऐप प्रोवाइडर्स भी डिजिटल लेंडिंग को लेकर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको यू हैव टू अलाउ योर माइक्रोफोन, योर कैमरा, योर फोटो, क्योंकि आप अपने केवाईसी भी आपको अपलोड करना होता है। तो जब आप डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि 40-50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो यही फोटो आपका डॉक्टर्ड फोटो को इधर उधर करके आपके ही परिजनों को भेजा जाता है, ताकि आपका जो छवि है उसको मलिन किया जाए, उसको मलायन किया जाए, उसको खराब किया जाए और आपसे वसूला जाए। इवन जितना आपने 1 लाख का लोन लिया तो 10 लाख आपसे वसूला जाए। Hello aspirants of IBPS RRB Scale 2 Scale 3. The good news is IBPS RRB notification could come out very soon. It is being delayed due to amalgamation process, but never mind. Few banks have already reported their vacancies. Few banks are yet to report. कुछ बैंक अपना वैकेंसी दे चुके हैं, कुछ न्यूली अमलगमेटेड बैंक अपना वैकेंसी देने के कगार पर हैं। एक बार वैकेंसी कंपाइल हो जाए, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जितना भी डिले हो रहा है उस समय को आप प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करिए। हमारे वार्म अप बैचेस ऑन है। नोटिफिकेशन के बाद डेडिकेटेड लाइव सेशंस भी ऐड हो जाएंगे उसमें। जो भी अभी भी जो कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको 9 बजे और 10 बजे एक लाइव सेशन चल ही रहा है उनके लिए। कोर्स लिंक एंड एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन। सो बिफोर वी गो स्टार्ट, दीज आर की डेफिनेशंस। इस क्लास में आएगा DLA, LSP, DLG, APR. What is digital lending? Through mobile phones, through applications. DLA, digital lending apps, the apps that are providing loans, like there are your Axis, ICICI, HDFC, SBI, Yono app, etc. They have their digital platforms. Also they have entered into agreement with other app providers कि वो लोन देंगे। जैसे आपके फोन पे, पेटीएम में भी लोन अवेलेबल है, उस तरह के प्लेटफॉर्म्स। और solely engaged in money mantra etc. there are few applications they are providing. So these applications are called DLA. LSP, lending service provider, partnering with REs to offer digital loan services, means they are not banks. They are entered into agreement with banks, NBFC, HFC कि सर आपका पैसा, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोन देंगे। फिनटेक जैसे कंपनी। LSP, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ना तो पैसा उनका है, बस कस्टमर बेस उनका है। ठीक है, लोन बैंक दे रहा है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC, SBI, बट जो एप्लीकेशन है वो किसी और का है, दैट इज LSP। DLG, डिफॉल्ट लॉस गारंटी, ये एक ऐसा कंपनी होगा जो किसी भी बैंक का, मतलब जब डिजिटल लोन लेंगे आप, देयर इज ए रिस्क ऑफ NPA, सो देयर विल बी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कि वो लॉस ऑब्जर्व करेगा, आप उसको कुछ फी देंगे जब आपके पोर्टफोलियो में लॉस होगा। ठीक है, मैक्सिमम 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी गारंटेड। ठीक है, APR, एनुअल परसेंटेज रेट और एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, यू कैन से इट, that will include all charges. I will take you to that. What is digital lending? First understand LSP, an agent, एक एजेंट है ऑन बिहाफ ऑफ RE मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज, RE मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज, acts on behalf of a regulated entity to perform parts of the digital lending process like customer acquisition, underwriting support, servicing, monitoring and recovering following RBI's outsourcing guidelines. आप जो LSP है मतलब वो एप्लीकेशन प्रोवाइडर है।
ठीक है, वो पैसा उसका नहीं होगा, पैसा बैंक का होगा, मगर कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर मॉनिटरिंग, डाटा अंडरराइटिंग, क्रेडिट एवेल्युएशन, कितना अमाउंट दिया जा सकता है, वो एग्रीमेंट डिसाइड करेगा. एंड वन एलएसपी कैन एंटर इनटू 2 to 3 कंपनीज, 2 to 3 बैंक्स. वो अपने कस्टमर को दिखाएगा बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी. दे विल शो कि आप यू आर एलिजिबल फॉर 5 lakhs. HDFC will offer you at 20%, 10%. Bajaj Finance will offer you at 25%. ओके, सो दैट ऑफर दे विल डिस्प्ले. एक पैरेलल ऑफर आपको मिलेगा, जैसे आप क्रेडिट कार्ड या फिर जैसे car-dekho.com, यहाँ पे जाकर आप वेरियस कार को आप कंपेयर करते हैं, लाइक दैट दैट डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म विल शो यू. ओके, अच्छा यहाँ पे सब हेडिंग थोड़ा भूल है, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा. आरई मस्ट परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस ऑन एलएसपी डाटा प्राइवेसी, borrower conduct and technical capabilities. LSP with multiple RE partners must display all loan offers. मतलब वो कंपेयर करेगा ICICI क्या दे रहा है, एक्सिस कितना दे रहा है, what is the processing fee. and LSP must not promote any particular RE. ये LSP जो है, they will not promote कि HDFC अच्छा है, ICICI अच्छा है, SBI अच्छा है. They will just give you the comparison based on your preferences, based on your eligibility, based on competitive interest rate. You will choose one. ठीक है, तो एप्लीकेशन किसी और का होगा, पैसा वेरियस बैंक का होगा. एंड दिस वन लोन सर्विस प्रोवाइडर हैज एग्रीमेंट विथ वेरियस आरईज, रेगुलेटेड एंटिटीज. ठीक है, आप होम लोन लेना चाहते हैं, होम लोन फ्रॉम वेरियस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेरियस बैंक्स विल बी ऑफर्ड. ठीक है, यू अंडरस्टैंड डिजिटल लेंडिंग नाउ. डिजिटल लेंडिंग समझ में आ चुका होगा. Concerns raised, why digital lending ecosystem is very challenging. जैसे कि मैंने बोला आपको, as I told you, there are various issues like their privacy issues, mis-selling issues, excessive involvement of third party agents. When there are agents, जहाँ पे दलाल आ जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है. DSA वगैरह आने के बाद बैंकिंग का जो सिस्टम है कितना खराब हो गया है, लोगों को कितना मिस-सेलिंग किया जाता है. ठीक है, अनफेयर एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, चार्जिंग ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, harsh recovery methods. Even they send your bad photographs to your own people just to recover their loans. तो इनका vicious एजेंडा होता है. तो ये सब कारण है जिसके लिए डिजिटल लेंडिंग का डायरेक्शन दिया गया है. ठीक है, सो एक पार्ट जो है पारा 17 दैट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम जून 15, रेस्ट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of November 2025. And all the banks, all the cooperative banks, NBFC, Housing Finance Company, NABARD, CDB, AIFIs, मतलब All India Financial Institutions, ये सब के लिए लागू है. इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल. ठीक है, कोई भी लोन प्रोवाइडर, कोई भी बैंक जो लोन दे सकता है आरबीआई के नियम के अनुसार, they can enter into an agreement with an fintech company, with a company which has applications developed. ठीक है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट था. एपीआर इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, अदर एसोसिएटेड चार्जेस. मतलब व्हाट इज अदर एसोसिएटेड चार्जेस? एंड देन डिफॉल्ट लॉस गारंटी, a contractual arrangement between a regulated entity and another entity. The other entity guarantees to compensate the RE for losses due to borrower defaults, applies up to pre-specified percentage of the loan portfolio, includes both explicit and implicit guarantees linked to portfolio performance. ठीक है, मतलब default loss guarantee means when you are entering into an agreement, आप जब किसी के साथ एग्रीमेंट में जाते हो टू ए लोन सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल लोन्स आर रिस्कियर बिकॉज यू डोंट मीट कस्टमर्स डायरेक्टली. इसीलिए क्रेडिट मैनेजमेंट में कस्टमर मीटअप बहुत जरूरी होता है बिफोर डिसबर्समेंट. इन बिगर लोन्स द क्रेडिट मैनेजर गोज फॉर ए पीडी. ठीक है, पर्सनल डिस्कशन विद द कस्टमर, राइट. बट इन डिजिटल लोन यू डोंट डू दैट. सो या फिर एक मैक्सिमम फोन कॉल, तो देर इज ए रिस्क. सो अप टू 5%, जो कि मैं आगे मेंशन किया हूं, अप टू 5% ऑफ द पोर्टफोलियो यू कैन कवर विथ एन एडिशनल गारंटी, डिफॉल्ट लॉस गारंटी. कोई गारंटी प्रोवाइडर कोई दूसरा कंपनी हो सकता है, कंपनी ही होगा, ए सेपरेट कंपनी which is ready to give you loss guarantee. That means up to 5% if you are going to lose, because 5% is a huge money for banks point of view. Normally for better banks the NPA ratio is below 1%, somewhere around 1 to 2% for some other banks too. So 5% loss is a huge. So how banks will cater that loss? उस loss को कैसे कम किया जाएगा? अगर 5% तक loss होता है
तो आप डिफॉल्ट लॉस गारंटी ले लेंगे, मतलब 5% आपका सिक्योर है। इतना अगर एनपीए भी हो जाता है 5%, यू आर स्टिल एट ए सेफर साइड। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गारंटी प्रोवाइडर? आपका नुकसान होगा तो मैं क्यों भरूंगा? बिकॉज you people, all the service provide, all the loan providers, all the regulated entities, for every portfolio they will pay me the fee at least 0.5%. So अगर लॉस नहीं होगा, दैट फी इज माई अर्निंग। लाइक इंश्योरेंस, आप टर्म इंश्योरेंस का पैसा देते हो, यू पे फॉर टर्म इंश्योरेंस, but why the insurance company will give you 1 crore rupees upon your death, even if you die after 2 years, and you paid only 20,000 as premium, the insurance company gives your family 2 crore rupees. Why? 20,000 लेकर 2 करोड़ दिया तो कंपनी का क्या फायदा? बिकॉज somebody might die, but not everybody will die, right? So it's a risk assessment, it's a distribution of risk, so they earn from the fee. So you have to arrange somebody else as a default loss guarantor, so that company will cover your default loss up to what percentage of your portfolio? Up to 5% of your portfolio.